and then now we come to media. मीडिया को फिर से हम कोशिश करेंगे स्ट्रक्चरली देखने की कि क्लास स्ट्रक्चर से और पेट्रियार्की से इसका क्या रिश्ता है, कौन इसको कंट्रोल करता है। तो वही सब बात जो लॉ के लिए मैंने कही थी कि लॉ कंट्रोल्ड बाय द रूलिंग क्लास, द पीपल इन पावर, और क्योंकि वो उसको कंट्रोल करते हैं, वो लॉज बनाते हैं, तो जाहिर है कि वो अपने मफाद के लिए उसको बनाते हैं। controlled by the ruling class to perpetuate the interests of the ruling class, and controlled by men, the patriarchal system, to perpetuate patriarchy. Both these principles would apply to media as well in our countries. We'll go into this a little later. But सबसे पहले कि मीडिया क्या है। बुशरा ने कहा कि मीडिया मीडियम का प्लूरल है। बिल्कुल ठीक। तो मीडिया is the way of taking ideas, views, information, opinions. तो यहां हम मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं कोई बात, कोई जानकारी, एक किस्म, मतलब वन सेट ऑफ पीपल पासिंग इट ऑन टू द अदर्स। और जब हम मैस मीडिया उसमें जोड़ देते हैं तो वो हो जाता है कि जब बहुत से लोगों तक, मतलब बहुत से लोगों तक बात पहुंचाने वाला जरिया। मैंने को पहले आता था उर्दू में मीडिया का लफ्ज, अब मैं भूल गई। हाँ, ये मैंने वहां सीखा था। जराए अबलाग। ओके जी। The word even sounds as if it's Quranic. जैसे खुदा खुद बोल रहा है। Look, Tamina, I told her before she can't sit at the back. Nobody can see you, Tamina. तुम यहाँ आओ, तुम यहाँ आ जाओ ना। हाँ जी। तो मीडिया, just a sweet, quick one, and I might add here really कि इतना वक्त कम है, इसलिए जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं वैसे होती है, वरना everything comes from the group. We just go around and keep adding, the group adds to it. But we are really doing this teaching in the most, I mean, in a way which one is always talking against. So one is going against one's principles, but that happens in every workshop, which is so short that you end up giving lectures while you don't believe in it. But you can't really help it then. From this writing on the wall outside here, Hakim Falana Digana, जो हर दीवार पे लिखा रहता है, that's media. Somebody is giving you messages all the time. हकीम की बात है, या हमदर्द दवाखाना, या फलाना सोप लगाओ, सोप नंबर 505, जो सड़कों पर दीवारों पर लिखा हुआ है। ये है अपना लोकल काइंड ऑफ थिंग, कोई स्मॉल टाइम हकीम। लेकिन इस तरह की फिर बिल बोर्ड्स जो कराची में आपको दिखेंगे, द प्रिंसिपल इज द सेम। जहां किसी इंसान की नजर पड़ती है, आज वहां कोई ना कोई मैसेज हमारे लिए लिखा होता है। यू कांट लुक एनीवेयर विदाउट अ मैसेज पॉपिंग आउट ऑफ देयर टू अफेक्ट योर डिसीजंस। वो वहां इसलिए है क्योंकि वो आपके फैसले आपसे करवाना चाहते हैं कि भाई अगर किसी हकीम की जरूरत है या किसी दवाई की जरूरत है, ये दवाई है, और हम आपको बताते रहेंगे, क्योंकि तब जब आप पहुंचो काउंटर पे तो आप उसका नाम लेके वो ले आओ। वी हैव from that we move on. सबसे पहले is the personal mouth, word of mouth, interpersonal communication. It can be in the form of people talking to each other. It can be form of a Maulvi talking. It can be form of an activist going on talking, that whole thing. Then it is these kinds of billboards, the
writings on the walls. They move on to simple leaflets, pamphlets, newspapers, newsletters, all kinds of books, textbooks, children's books, the entire print media, newspapers, and the whole works. I mean, theatre, etc., also come in the other. Then we come to the electronic media, radio, television, films, video, etc. Now, who controls media? That's our next question. और इसमें ये है कि our government controls a lot of media, mass media is controlled a lot by our government. Television and radio is entirely controlled by our government. Through censorship, our government controls the print media. Indirectly, through the newspaper, the newsprint quotas, the government controls the media. फलाना ठीक से काम नहीं कर रहा है, उसका newsprint का कोटा कम कर दो. Through government advertising, government controls media. ये हमारी बात मान रहे हैं, इनको सारी government advertising दे दो. तो मीडिया को मतलब कुछ तो चीजें जो डायरेक्टली गवर्नमेंट कंट्रोल करती है. गवर्नमेंट कहती है ये टेलीविजन हमारा है, ये रेडियो हमारा और ये अखबार हमारे हैं. उसके अलावा जो दूसरे अखबार वो है वो हमारे नहीं, पर हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं सेंसरशिप लगा के, डायरेक्टली इनडायरेक्टली. कोटा सिस्टम, न्यूज प्रिंट का एडवर्टाइजिंग, एनकरेजिंग थ्रू अदर बेनिफिट्स. इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी हमारे यहाँ, इंडियन एक्सप्रेस का मतलब कुछ ना कुछ टीटी करते रहते हैं और उससे वो बंद कर देते हैं. साफ साफ नहीं कहते हैं कि कंट्रोल कर रहे हैं, बट दे हैव हंड्रेड्स ऑफ वेज. इंडियन एक्सप्रेस में यहाँ तक हुआ है कि एक लाइन में है दिल्ली में ये अखबार के ऑफिस, इंडियन एक्सप्रेस जो कि सरकार की मुखालफत करती है, वहां बिजली बंद हो जाएगी कई घंटे तक, बाकी सारे न्यूज़पेपर ऑफिसेज में बिजली चलेगी. I mean, it happens to that extent, and recently it's happened. या अब ये कह दिया कि भाई आपने फला टैक्स पे नहीं किया तो ये जो बिल्डिंग है पूरी की पूरी सरकार ले रही है. यू हैव built here certain offices which were not meant to be built. अब फिर अब केस लड़ते रहना, साल 2 साल 4 साल केस लड़ना, लेकिन तब तक तो बंदी होना. आप ऐसे all that. So government controls that. इसके अलावा टेक्स्ट बुक्स गवर्नमेंट कंट्रोल में है. मैस मीडिया के दूसरे जो कंट्रोलर्स हैं, दैट इज द रूलिंग क्लास, द कैपिटलिस्ट क्लास. अब बाकी जितनी चीजें हैं, बड़े कैपिटलिस्ट, छोटे कैपिटलिस्ट, people who are selling something, I mean including these things on the walls here. So it is that class of people who controls the mass media. बहुत सारा वक्त टेलीविजन और रेडियो पर भी, जो कि गवर्नमेंट मीडिया है, ये वाली क्लास कंट्रोल करती है डायरेक्टली थ्रू एडवर्टाइजिंग, through sponsored programs. That big chunk of time, the elite, the ruling class, the capitalist class does that. Religion controls a lot of this interpersonal medium, plus also sometimes they even have programs on radio, the time is given to them. For on television you have time for your religious leaders to come and talk. So those people control media or have access to media. So that is in terms of class, the ruling class, the ruling religion, the ruling nationality. They control the ruling community. They control mass media, mainstream media. कैपिटलिज्म के साथ मीडिया के सीधे साधे लिंक्स हैं और वो समझना ज़रूरी है. जब हम सारी एडवर्टाइजिंग की बात करते हैं, फिल्मों की बात करते हैं, सबकी बात करते हैं, that's all the capitalist class, the people who are producing
जो चाहते हैं कि आप कंज्यूम करें, और फिर आप वो डिसाइड करते हैं कि किस तरह की औरत कंज्यूम करती है, फिर उस तरह की आइडियोलॉजी फैलाई जाती है। पढ़ी लिखी औरत अगर घर बैठ के ज्यादा कंज्यूम करती है तो वो बार बार कहेंगी घर पर बैठना अच्छा है, घर पर बैठना अच्छा है। वही आपको बताएंगे कि आपने कपड़े क्या पहनने हैं, कौन से साल में कौन से कपड़े पहनने हैं, कौन से महीने में कौन से कपड़े पहनने हैं, कौन सी लिपस्टिक लगानी है, कौन सी जूते पहनने हैं, कितनी उनकी हाइट होनी है, वगैरह वगैरह। और साथ के साथ वो बताते जाएंगे कि लंबी औरत अच्छी होती है, कॉन्टैक्ट लेंस लगाने वाली औरत ज्यादा अच्छी होती है, चश्मे वाली से कोई शादी नहीं करता है, उसकी तरफ कोई देखता नहीं है, रूबीना चश्मा उतार लो, वगैरह वगैरह। Okay, then the next, I'm really going fast, but you know it all. So, the government, which means the ruling party, I forgot. Government का मतलब है ruling party. No time is given to the opposition parties, etc., etc. So when we talk the ruling party, the ruling class then, so if the opposition is also the ruling class, which they normally are, they control it as capitalists, they control it as people who have economic power and who might own the newspaper, etc. और आप ये देखेंगी कि जितने भी आपके बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस हैं, they also own newspapers. हमारे यहाँ बिरला जी हैं बड़े, तो उनका न्यूज़पेपर का पूरा, हमारे यहाँ हारून हैं. Yeah, I mean it's almost the same. You see, the people who own property will also own the tools of creating ideology. The whole information network, because that is the way to retain power. That is the way to influence people's thinking and to remain in power. तो हमारे यहाँ जितने भी न्यूज़पेपर वो हैं, क्या कहते हैं इनको, मैग्नेट्स, what do you call के, this is that group of papers, फलाना group of papers, chain, हाँ, फलाना group, they are controlled by big business houses. All right, then we move on. That mostly media is controlled by men. और आप देख लेंगे कि सारे बड़े बड़े एस्टैब्लिशमेंट्स में ज्यादातर, चाहे वो टेलीविजन है, चाहे वो रेडियो है, वो मैस मीडिया है, कुछ भी है, मतलब main makers of media have been men. And a lot of this media is also for men. It's oriented towards them. And the links with patriarchy, links with the patriarchal ideology will come pretty soon when I move on to that. And the third thing in control is that it is urban controlled. Even in largely rural societies, it's urban based, urban controlled, urban oriented, most of it. Definitely urban based and urban controlled, most of the media. And उसकी implications अपनी है. 95% बात होगी शहर की, गांव तो है ही नहीं अपने अगर कोई अखबारात पढ़े तो गांव तो कोई है ही नहीं, वहाँ कुछ हो ही नहीं रहा है, उनकी जरूरतें नहीं है अपनी रोजाना उनके बारे में याद कराने की, वो they can be forgotten, they are not important. This is just the general few statements about media. हाँ, इसमें ये जरूर है कि हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया, फिर हमने देखना कैपिटलिज्म के साथ उसका लिंक देख लिया है, अब हम उसका इंपीरियलिज्म के साथ देखें, और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके साथ लिंक्स देखें, खासतौर से अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह। आज भी जो बड़ी बड़ी न्यूज़ एजेंसीज हैं जिनसे हम न्यूज़ खरीदते हैं बाहर से, वो अमेरिकन, ब्रिटिश वगैरह हैं। उनके हम अखबारें नहीं पढ़ते, सिर्फ उनकी हम मैगजीन्स, टाइम्स और वो नहीं पढ़ते, लेकिन हमारी अपनी अखबारों में जो खबरें आती हैं वो हम उनसे खरीदते हैं। हमारे टेलीविजन पर जो खबरें आती हैं हम वो उनसे खरीदते हैं। हमारे टेलीविजन पर बहुत से प्रोग्राम्स आते हैं जो हम उनसे खरीदते हैं। और उसका मतलब है, अगर हम कहते हैं कि मीडिया एक आइडियोलॉजी को परपेचुएट करता है, एक वे ऑफ थिंकिंग को परपेचुएट करता है, तो जिस देश से हम वो खरीद रहे हैं उनकी आइडियोलॉजी अपने आप
हमारे घरों में और हमारे जहनों में घुसती है। और इस पर बहुत बातचीत है कि मतलब it's impossible for third world countries to say to each other, to talk to each other, to communicate to each other without the mediation of these people. जो सुबह बात हो रही थी कि भाई चाइना के बारे में मुझे क्या पता, मुझे तो अमेरिकन मीडिया बताता है, उसको अगर मैं नहीं समझती हूँ कि वो ठीक है तो मेरी छुट्टी है। चाइना के बारे में आज आप और हम जो कुछ भी सोचते हैं समझते हैं वो उनकी बदौलत है। वो ठीक बताएंगे तो ठीक है, वो गलत बताएंगे तो ठीक है। वहां जाके कितने जने देख आएंगे और क्या क्या उसके बारे में आके कितने जने लिखेंगे। सो दैट देन इज आई थिंक द न्यू कॉलोनियल इंपीरियल connection with capitalism, connection with patriarchy. Okay, women and media, वही जहनियत जो मजहब में है, औरतों के बारे में वो सारी बातें जितनी हमने सुबह से की हैं, मर्द सुपीरियर है, वही मैं पाकिस्तान की बात कर रही हूँ और मोस्ट ऑफ इट इज रेलेवेंट टू इंडिया एज वेल। अल्लाह मियाँ ने जो असली बंदा बनाया वो मर्द है। क्रिश्चियनिटी जो हम बात कर रहे थे उसकी पोजीशन है, उसकी अहमियत ज़्यादा है, वगैरह वगैरह। दैट इज ऑल अगेन गिवन more or less the same way by different media to us. A lot of our books, a lot of our children's literature is based on religious mythology, religious stories. Even many of the films, even in the West, and in India of course, a hell of a lot of them are on that. Recently we have the privilege of seeing Holy Ramayana on our television. I'm told by our newspapers that Pakistanis watch it with as much interest as Indians do. So, lucky you. तो मीडिया क्या करता है, सारे जो स्टीरियोटाइप्स हैं औरतों के बारे में जो हमारे मजहब ने दिए हैं, कल्चर ने दिए हैं, उनको दोहराता है और पक्का करता है कि कोई भूल ना जाए कि औरत माँ है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स देती हुई रोज आपको अखबारों में माएँ दिखेंगी, आपको कॉम्प्लान पिलाती हुई, आपको प्रोटीन एक्स पिलाती हुई, आपके लिए अच्छा खाना बनाती हुई, अच्छी नूडल्स बनाती हुई माएँ सुबह से शाम तक आपको नजर आती रहेंगी कि औरत तू माँ है, वो दिखाएंगे। तू हाउसवाइफ है, घर का काम तेरा काम है। तो अगर कोई औरत फिर ये कहना भी चाहती है कि भाई मेरा नहीं है, तो वो सारी की सारी अखबार में जो औरतें हैं वो उछल उछल के कहती है नहीं तेरा ही है नहीं तेरा ही है। तो वो बेचारी ये हिम्मत ही नहीं करती अपने मर्द को कहने की, क्योंकि वो उसकी जो ओपोनेंट्स हैं वो हर तरफ से बोल रही है, टेलीविजन में से बोल रही है, रेडियो पे से बोल रही है, चारों तरफ से वो कह रही है कि नहीं तेरा ही है। तो बस तेरी फिर क्या जरूरत कि तू बोले कि नहीं मेरा नहीं है, सारी दुनिया कह रही है तेरा भाई। सो वुमन एज हाउसवाइफ, एज मदर, बहुत कम काम करने वाली औरतें हमारे मीडिया में दिखाई जाती हैं कि कभी कोई मजदूर दिखा दे किसी ऐड में, या कभी कोई काम करने वाली या अपनी काश्तकार दिखा दे या किसान दिखा दे, या कोई लॉयर या कोई डॉक्टर या कोई ये या कोई वो। सो woman is seldom shown as a worker. So this whole ideology that woman is not a worker doesn't have to be, is perpetuated. When we go on to the films and to television programs, etc., often the image is given, the working woman is really not quite the ideal woman. कुछ गड़बड़ वो कर रही है, कुछ ठीक नहीं कर रही है। बहुत फिल्म आफ्टर फिल्म इन इंडिया यू वुड सी वेयर शी डिसाइड्स टू बी अ पर्सन, वांट्स टू गो आउट, एट द एंड ऑफ द फिल्म वापस आ जाती है कि नहीं यार वो आई वाज मिसलेड, वो गलती हो गई थी, तो मेरा तो यही ठीक है मामला। और द वर्किंग वुमन इज द seductress, the secretary, constantly after other women's husbands. So very often the working woman is shown as the one who begins fights, as the one who's not quite right, as the one who is after other people's husbands, as the one who's not quite moral, as the one whose children have psychological problems, as the one whose children are not growing well, as the one
who is moving away from her natural duty. The other stereotype is that woman has to be beautiful. With that, the connection is her main thing is her body. If she's fair and good looking, then she can be consumed better, her price in society will be higher. And if that is the case, then every woman must aspire. If she has not been made beautiful by God, then the entire industry will help her. If she's too fat, she'll be made thinner. If she's too thin, she'll be made fatter. If she has breasts which are too big, it will make small. If they are small, they'll be made big. If her nails are small, they'll be long, small. Grey hair, this hair. I mean, the works. You've got the industry to do it. पर उसके पीछे चीज ये है कि तुमने खूबसूरत लगना है. उसके साथ साथ ये है कि तुम्हारी पर्सनालिटी क्या है, तुमने काबिलियत कितनी है, तुमने दिमाग कितना है. That's not important because you're not going to be working outside. You're not running the society. You are at home and you are your husband's property. And just as he wants a good television and a good car, he wants a good woman. So that thing, और जब फिर हमने कल बात की थी, in this whole process where her body is made important, to some extent she is made into an object. और ये प्रॉपर्टी का नोशन तो मजहब में भी है कि भाई औरत मर्द की प्रॉपर्टी है. तो मीडिया उसको ही परपेचुएट करता है. कोई नई बात कई दफा नहीं भी कह रहा होता, पर इसके तरीके बदल जाते हैं, मॉडर्न तरीके हो जाते हैं. मॉडर्न साइंस इज यूज्ड टू परपेचुएट एंशिएंट थिंग्स. मॉडर्न साइंस इज यूज्ड टू परपेचुएट conservative notions. That's the beauty of modern science. It can be used the way you want it. Modern science doesn't necessarily take you to modern things. So the notion of beauty, woman's body as important, woman as an object. और इसके साथ साथ आ गई violence against women. Media is responsible for spreading, increasing, justifying violence against women. The whole pornographic industry, a whole lot of your cartoons, etc., a whole lot of advertisements, बहुत सारे advertisements जिसमें ये है films showing rape cases, showing eve teasing, the way our heroes relate to our heroines in film after film. पूरी छेड़खानी है. आवाज कर रही है फलानी फिल्म में उसने कर दी. So the more you say no, the more he pushes you. The more you say no, the more he pushes you. करना था इनकार मगर इकरार तुम्ही से कर बैठे ना करते टड़े टड़े. तो मैं एक बात भूल गई थी. How come you know the song then? वाह, हमारे लिए आज रोज गाते थे वो, हैं पीछे पीछे गाते थे वो. All right, I go back a little. के in the modern times मीडिया तो शुरू से रहा है, जब से इंसान रहे हैं. लेकिन पिछले 100-150 सालों में जब से प्रिंटिंग प्रेस आई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आए, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी बढ़ी, मीडिया की आउटरीच बेइंतहा बढ़ गई. एक रात में लाखों पैम्फलेट छापे दिए जाए थे जो सबके दिमाग पर थे. पहले एक बात करने के लिए सालों लग जाते थे, ढिंडोरा पीटो, फलाना करो, ये वो. And the electronic media has really increased the outreach of media and has made it that much more insidious and dangerous. And it has made centralized control of media possible. पहले ये कुछ नहीं था, छोटी छोटी जमात थी, वो अपनी अपनी बात पीटते रहते थे, करते रहते थे, बाद में जब झगड़ा होगा देखी जाएगी. अब तो आपकी रूलिंग क्लास ने उठाया टेलीविजन और कह दिया, उठाया रेडियो और कह दिया, उठाई अखबारें और कह दिया, और कह दिया कि सेंसरशिप है भाई साहब, आप कोई ऑपोजिशन पार्टी कैन नॉट टच दिस होल मीडिया आई एम गोइंग टू कंट्रोल. So the centralized control of media is possible and it can be used then very effectively and very dangerously. Now I would like to link women and media to the development of women.
We are not just talking because it is insulting, it shows us naked, but because it affects our life. For example, जो वायलेंस हम पर्दे पर देखते हैं वो पर्दे तक नहीं रहती, वो सड़क पर आ जाती है। वहां से देखकर, जब आप हिंदुस्तान में, मैं देखती थी 9 से 12 कभी आप शो में जाएं, तो वहां से जो भड़काए हुए मर्द निकलते हैं, जिस तरीके से वो अपने आप को खुजलते खुजलते बाहर निकलते हैं, बिल्कुल ये लगता है कि अगर इनकी कोई औरत पकड़ में आ गई, they will just jump on her. I mean, that is the psychology with which they leave cinema halls. That is the psychology with which they then go and approach women on the roads, women in the homes. खुशी चली गई, वरना she could tell you a story कि वहाँ बंगाल में गाँव में यात्रा होती है, जैसे हमारे यहाँ वो नहीं होते रामलीलाएं होती हैं, ऐसे वहाँ यात्रा होती है। A group of people will come and perform, और पूरा गांव, ज्यादातर मर्द वहां जाके देखेंगे। हमारे यहाँ औरतें भी जाती हैं, जहाँ बहुत इस्लामिक हो जाता है चक्कर, वहाँ मर्द जाते हैं। My God, they are living good today. इस्लाम में गई और इस्लाम पे आई। देखो, तो वहाँ मोस्टली थीम्स होते हैं फोक टेल्स, फोक सॉन्ग्स, रिलीजन टू सम एक्सटेंट, वो होते हैं। लेकिन सडनली दिस पीपल फाउंड खुशीज ग्रुप्स एक्सेट्रा इन द विलेजेस इन नोआखली डिस्ट्रिक्ट कि उसमें वो यात्रा में उन्होंने कैमरे नंबर लगा दिए जी। वो एक औरत को साथ ले आते थे, तो वो अपना छोटा सा घगरा पहन के वहाँ इटलाती थी और नाचती थी, न फलाना न ढिकाना, चंपा बीती है न फलानी ढिकानी। And women started noticing when the husbands would come back a certain violence in them, a certain expectations from them. Strictly, she told me. Partly yes, but really, I mean, this is the jatra. I'm not talking of cities. I'm talking of jatra में जहाँ वो कोई थीम दिखा रहे हैं, बीच में किसी औरत को लाके और नचवा देंगे भड़कता हुआ नंबर, and then that peasant goes home, treats her differently, talks to her differently, approaches her differently, and some of them वो खुशी की ग्रुप की औरतें थी। They suddenly said, ये चक्कर क्या चल रहा है? पता लगा कि वहाँ ये चल रहा है। Then they organized themselves and went and kind of sort of spoke against it the next day and said, what the hell is going on? They stopped it. But that's how violence spreads against women. Our lives become that much more difficult. And I was saying the other thing the other day कि जब आप बार बार violence देखते हैं पर्दे पर, इधर उधर, हर एडवर्टाइजमेंट में, तो फिर वो जो आपकी सेंसिटिविटी है वायलेंस पे, ये कोई गलत है, वो कम होती चली जाती है। यू बिकम desensitized. Your sensibilities are gradually killed. अब जैसे हम बड़े आराम से चाय पीते पीते खबर पढ़ लेते हैं कि फलानी को रात को जला दिया, फलानी को डाउरी डेथ में मार दिया, चाय के घूंट के साथ साथ हम आराम से बैठे बैठे, nothing touches us anymore. Your sensitivities, your sensibilities are killed, and somewhere you start accepting this is women's lot, this is women's fate. She's less than human, she's a body, she's not quite there. It makes it easier for you to pinch. Everybody is doing it, every film is showing it, so I'm not doing anything new. It's almost expected of me. You see this, जब गाँव में आप जाओ तो कोई कॉलेज के पढ़े लड़के घर आए हुए होते हैं, तो वो हमारे जैसे औरत को देखते हैं तो उनको बेचारों को परेशानी हो जाती है कि अगर मैंने इसको नहीं छेड़ा तो शायद ये बुरा ना मान जाए। They almost really feel obliged. अगर इसकी जैसी औरत बाल कटी है और मेरे जैसा लड़का यहाँ घूम रहा है, I must say something to her. It's almost my duty. तो बेचारे by force some of them have to perform. This is really that they feel that this is it. एक पढ़ा लिखा लड़का और पढ़ी लिखी लड़की तो यही करते हैं। And what happens is कि हमारे गांवों में औरतें, हमारे यहाँ तो गुसलखाने होते ही नहीं है ना, बाथरूम नहीं होते हैं हमारे यहाँ पर, ना पाखाने होते हैं ना गुसलखाने होते हैं। गांवों में ज्यादातर आप देखेंगी तो औरतों को सुबह सुबह जल्दी निकल के जंगल जाना पड़ता है, या फिर शाम को जब गोधूली के बाद जब थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है तब वो जाती है। और नहाने के लिए
कुएं हैं या तालाब है और औरतों का अलग से घाट होता है, वहां जाके नहा धो आती है, सब कुछ कर लेती है। तो गांव में औरत के जिस्म को कभी ये नहीं देखा कि ये एक ऐसी चीज है जिसको देख के मजा लिया जा सकता है। लेकिन अब जब चारों तरफ औरत के जिस्म को दिखाया जा रहा है, औरत का जिस्म एक कंज्यूम करने की चीज बन गई। तो वो जो गांव के मर्द का रिश्ता था अपनी औरत के साथ, औरतें 50 नहाती रहे जैसे मर्द नहाते रहते हैं, किसी को देखने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, there's nothing to it. That is change. इसके साथ साथ मीडिया spreads the certain ideology how women have to be looked at. Do they have to be looked at secondary? Do they have to be looked at as workers? Do they have to be looked at? So it creates that ideology again. Much worse than that, it makes our self-perception, how we women look at ourselves. It makes us see ourselves through their eyes suddenly. What media tells us. So women's self-perception is influenced by this. I must look beautiful. I must wear clothes like this. I must not work outside. I must feel guilty when I have left my children and husband behind. I must. I shouldn't do this. So that's self-perception. And it affects women's development. ये आपकी आइडियोलॉजी पर है कि आप कितनी जल्दी लड़कियों के स्कूल बनाएंगे, कितनी जल्दी लड़कियों के कॉलेजेस बनाएंगे, कितनी जल्दी उनके अलग यूनिवर्सिटियां बनाएंगे कि इकट्ठी यूनिवर्सिटियां बनाएंगे, कितने उनके लिए ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज देंगे। आप उनको अगर किसान समझते हैं तो आप उनको ट्रेनिंग देंगे एनिमल हस्बेंड्री में, एग्रीकल्चर में, इसमें उसमें। लेकिन अगर आप उनको हाउसवाइफ समझते हैं तो आपके सारे प्रोग्राम्स होंगे इंडस्ट्रियल होम। नाम तो इंडस्ट्रियल होम होगा, सिखाएंगे कढ़ाई सिलाई। मैं बड़ी खुश हुई, मैंने कहा पाकिस्तान में तो हर जगह इंडस्ट्रियल होम खुले हुए हैं। मैं वहां गई, मैंने कहा तेरी साले झूठे, ये कहाँ इंडस्ट्री है इधर? तो इंडस्ट्रियल होम्स, कढ़ाई, बुनाई, पापड़ बनाना, अचार बनाना, भजन मंडल, हमारे यहाँ भजन मंडलियां, महिला मंडलियां, बिकॉज दैट इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ अ वुमन. A woman must be taught womanly things, feminine things. Jobs भी देंगे तो nurse, teacher, extension of her housewifely role. What are those extensions? Nurse, teacher, secretary, air hostess, receptionist, all these jobs which are mere extensions of her feminine role within the family. You serve your husband, serve your boss. Serve your husband, serve the executive class. Sony, executive class. PIA has got Sony. Sony है, Sony तो executive class का नाम है Sony. और Sony में वो जो मर्द है, वो जो, you see, one is the executive class which is Sony, but then there is that air hostess which is Sony standing there. और टक टक की लगा के, this is in this Herald by the way, I just picked it up from here. हाँ, the Sony I saw today. And that मर्द टक टक की लगा के उस Sony को देख रहा है. So, Sony, you are not sure which Sony. Both Sony. And Sony, O भी Sony. Class is Sony, औरत भी Sony. Of course. I mean, of course. Sony. Consumer, she's there for your service. She's a woman. Most executive class and economic class travelers are women. I mean, men. So it is really, the whole world is for them. The receptionist, the this, the that, the air hostess is catering to the male who's traveling there. He must never feel left out. He must always be served. And how should these women be? Not strong, capable women who can fly well, but pretty, beautiful, so that he is at home. He feels कि मतलब वहाँ ऊर मिलेगी नहीं मिलेगी, API ने तो ऊरें देगी, इंडियन एयरलाइन ने तो ऊरें देगी। यहाँ तो मस्ती करो ना सोनी के साथ, ऊपर जाके देखेंगे बाद में। क्या चाहता हंस रही है वहां बैठ के, गुस्सा आना चाहिए तेरे को। ओके, सो द एंटायर प्लानिंग for women's education, planning for women's training, planning for women's positions, it's all influenced by media. I am not saying
that media only influences. Media has, now I'll use a big term, media has a dialectical relationship with society. It reflects what society is thinking, but it also changes what society is thinking. तो ये दो तरफा रिलेशनशिप है मीडिया की. काफी हद तक जो सोसाइटी में हो रहा है वो उसको दर्शाता है, झलकाता है, काफी हद तक सोसाइटी को वो किसी एक खास डायरेक्शन में धकेलता है. On media, this is it. Then we'll go to alternative media after that, very briefly, in 5 minutes. But on media, if anybody wants to add, comment, question.